टॉक्सिक रिलेशनशिप माने क्या होता है उसमें? व्हाट हैपेंड विद यू? Verbal abuse, physical abuse, mental abuse. Hi, I am not Siddharth Kannan, I am Siddhant Karnick. पर सिद्धांत कानन के साथ मैंने दिल से दिल बातें की है, दिल मैंने अपने दिल पे छापा हुआ है और शायद थोड़ा ये दिल उनके दिल पे भी छाप चुका हूँ. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इट्स अ वंडरफुल चैनल एंड दिस होस्ट इज़ इवन मोर वंडरफुल. आई विल सी यू सून ओवर हियर. When Sid meets Sid, मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है और जब people started saying यार ये Sid का जो है ना रोल मजा आ गया, but I hate the bastard, I hate him, ये सब बोलते रहते हैं ना, मैंने कहा क्या तारीफ मिले मेरे भाई को, because that's the biggest compliment anyone can get. मेरा भाई Sid कैसा है? You know, it's such an honor. आप मुझे भाई बोल रहे हो, दोस्त बोल रहे हो. Sid K has been a legend for us. I don't want to say when we were growing up, but when we started off in the industry, I remember Sid K was ruling the roost. Rishi K was another one who came to my college one day. I got to host you guys, and today to sit here in front of you, sir, it's such an honor. And you calling me a friend and a fan, bro. Life has come full circle. Thank you so much. नहीं, पर मैं एक चीज जेन्युइनली बोलूं, उस वक्त भी जब भी मैं तुमसे मिलता था, I felt so good because तुम्हारा मूवी पर्सनालिटी है वैसे ही, you know, big screen guy, good looking guy, बोलता अच्छा है, humble guy, knew what he was doing. But कहीं ये 20 साल में 2003 रीमिक्स हुआ when you were a craze, do you feel तुम्हारा potential underutilized किया गया था? Really honestly दिल से? Honestly दिल से, मैं आपको ईगो से बोलता हूँ. ईगो से हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि underutilized हुआ हूँ, मुझे मौका नहीं मिला. ये जो हम नैरेटिव सेल्फ बनाते रहते हैं, लेकिन 20 साल बाद अभी जब ये मौका मिला है, मुझे लगा है कि इट टुक मी दोस 20 years टू अर्न एंड डिजर्व दिस पॉइंट. और तब जाके लॉटरी मिली है, और वो लॉटरी बाय चांस नहीं, बाय डेस्टिनी लगी है. बट रियली जब एक लड़का हाथरॉ बनता है नेशन का, यू नो, रीमिक्स में, आई नो, जब एक होटल हुआ करता था हॉलिडे इन जुहू में, शायद एक बार तुम आए थे, you may not remember, मुझे याद है मैं 2-3 लड़कियों के साथ बैठा था, वाह इसका वो सलाइवा ऊजिंग वाला सिचुएशन था. I really thought तुम A लिस्ट कैटेगरी में बहुत जल्दी पहुंच जाते. जी. Very honestly, we all think about it, right? जब टफ मोमेंट्स हम लोग को गया, साला क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो तुम्हारे साथ हुआ? बहुत बार, अभी भी होता है. We're always fighting that thing, I guess, but have to believe in a higher power above than myself. I think that's the only way to deal with these daily letdowns and disappointments. Have to believe in a higher power other than myself. ये जो तुम spiritual aspect बोल रहे हो, इसमें बहुत spirituality है, I'm spiritual myself too. ये बहुत आसानी से थॉट नहीं आता दोस्त. ऐसा नहीं होता कि यार हायर पावर, ये सब आता है रीजंस की वजह से. जी. इफ आई टोल्ड यू जेन्युइनली वो 2-3 टफ मोमेंट्स क्या थे जो तुम्हारे लाइफ में आए थे, वेयर यू सेड ये टफ है पर ठीक है, सिद्धांत यू डिड इट, वो क्या था? मैं टफ है की जिक्र करता हूँ. आई वॉज 25 years old. ये एक पिक्चर आई थी मेरी फास्ट फॉरवर्ड करके, डांस बेस्ड फिल्म थी. आई गॉट अ नेगेटिव लीड इन दैट, और मैंने बहुत मेहनत की, एंड आई वॉज ब्रिलियंट इन द मूवी. मूवी सक्ड बट आई वॉज ग्रेट इन इट. पर मुझे लगा कि ये मेरा मौका है, दिस इज द टाइम. द फिल्म बॉम्ब्ड, इट वॉज नॉट इवन देयर इन द थिएटर्स फॉर 8 days, यू नो, इट जस्ट वेंट आउट. आई वॉज डैम डिप्रेस्ड इन लाइफ. और मैं वही करता था, आई यूज्ड टू गेट ऑन माई बाइक. आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो मेरे लिए गेटिंग ऑन माई मोटरसाइकिल एंड ट्रैवलिंग इज़ माई मेडिटेटिव टूल. दैट्स वन थिंग विच सेंटर्स मी एंड गेट्स मी बैक टू न्यूट्रल. तो मैं एक राइड पे चले गया था, और इत्तेफाक से मैं एक स्टेबल पे पहुंचा जहाँ पे वन बिग pony was giving birth, and she was having difficulty giving birth. And for 8 hours we sent and tried to take out that little foal out from the pony. It was a very complicated affair. एक bond हो गया था animal के साथ. It came about trying to make the mother live and just letting the thing survive. One of those moments which really ground you and make you think that there's so much more to the world than just what we want to create. Anyways, my friend Rohan, he was a veterinarian, he was helping him out. और 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद, when he came out of it, we all were tired.
एक पॉइंट ऐसा था कि वो दोनों, both the assistant and him were tired. He made me put my hand into the horse's, the vagina of the horse and take the foal out. I had never done anything like this, but to experience that, it went beyond anything I'd lived and experienced. On our way back, I asked Rohan, I said, how did you go through this? You were totally tired, mentally, physically, everything, exhausted, and you still kept at it. And he told me something very simply. He's like, when you start something, never give up. You hear these things at that times and you really need to hear it. मैं quarter life crisis के through जा रहा था. That thing resonated to me. I came back in the industry, I came back and I started our work and audition, started off from scratch again. ये मिड लाइफ क्राइसिस मैंने सुना है जी. क्वार्टर लाइफ क्राइसिस पहली बार सुना अरे है। हम बॉम्बे में रह के इस इंडस्ट्री में हर 5 साल क्राइसिस होते रहते हैं. और सीरियसली मेरे साथ भी ये होता है यार। 25 is a very Genuinely? normal. Yes, it is. इट इज। तो वो कौन से इनर बैटल्स है, जैसे मिड लाइफ क्राइसिस में मुझे मालूम है क्या बैटल होता है, क्वार्टर लाइफ में क्या होता है? क्वार्टर लाइफ में यू आर 4 years आफ्टर 21. 21 इज द टाइम जब आपको पता होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में क्या करना होता है. पढ़ाई से लेके नौकरी से ज़्यादा वो प्रेशर आ जाता है, नॉट ओनली फ्रॉम पीपल एंड पेरेंट्स बट योर सेल्फ, क्योंकि दोस्त वो सब सेटल हो गए हैं एंड दे ऑन देयर वे. 4 years डाउन द लाइन यू स्टिल नॉट, आई वाज स्टिल नॉट ऑन माई वे. मुझे लगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मौका मिला है, एक्टिंग करूँगा, फिल्म, एवरीथिंग इज़ देयर, बट आई वॉज नॉट परफॉर्मिंग टू वेयर आई नीडेड टू बी. तो इट्स अ टाइम व्हेन वी स्टार्ट टू रिक्वेश्चन आवरसेल्व्स, आवर डिसीजंस. मैं फौज ज्वाइन करना चाहता था, राइट? वो ऑलवेज मेरा बैकअप प्लान था. आई वॉज टू ओल्ड टू ज्वाइन द आर्मी देन. आई हैड लॉस्ट ऑल माई बैकअप प्लान्स, और कुछ जरिया ही नहीं था बट स्टिक टू व्हाट आई एम डूइंग. एंड दैट्स व्हेन व्हाट डॉक्टर रोहन टोल्ड मी वाज, व्हेन यू पिक समथिंग, गिव इट एवरीथिंग यू गॉट, नेवर गिव अप. एंड आई सेड, भाई ये बना लिया है मैंने तो चलते हैं. और इत्तेफाक से ये मेरा एक हाइपोथेसिस रहा है, और मैंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट से भी ये बात की है इसके बारे में. जब भी anybody who's not even in the arts but in a freelance category and he's devoted himself into his craft, every time bank balance में कोई 3-4 हज़ार रुपए होते हैं, जब you start to really question, because emotional doubt तो होते ही हैं, लेकिन financial doubt जब आने लगता है ना, फट जाती है भाई, फट जाती है यार हाथ में आके. when you don't know when you're going to pay the rent or pay the next, दूध के लिए पैसे नहीं होते हैं ना, you calculated that, कहीं ना से तो कहीं से it comes यार, पैसे आ ही जाते हैं. पर तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल पैसे की क्या कमी थी? क्योंकि यू ऑब्वियसली केम फ्रॉम अ डिसेंट बैकग्राउंड, तुम्हारे पिताजी आर्मी में थे, राइट? तो तुम्हारे साथ भी ये हुआ था क्या? ये मैंने खुद अपने आप पे लिया था. 18 साल की उम्र से आई स्टार्टेड फाइनेंसिंग माई सेल्फ. आई थिंक एक ईगो और एक प्राइड रहता है. तो मॉडलिंग चल रहा था, आई यूज्ड टू बी दी MC. वो मॉल्स में जाते ना, जो एक बंदा बकते रहता है माइक पे, वो मैं था. अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, तो मैंने डैड को घर से बोला कि डैड, I will pay for my own education, and I paid for my tuitions, my college books, everything I paid for, including mobile phone and bills for that. तो हालांकि एक pillar of support from not just financial but emotional encouragement भी रहा है from family. At the end of the day, we come into this world alone, we go out of this world alone, and sometimes we find ourselves alone also. And it's at those times when ठीक है backup है, पर नहीं लेना मुझे. I've committed to being this. Dad said फौज ज्वाइन करो, I didn't join the फौज. I'm here, तो let me take this on my own. And आ ही जाता है कहीं से ना कहीं ना तो कहीं. मैं तुम्हारे पिताजी से मिला था बहुत साल पहले, और मुझे याद है एक पार्टी में तुम दोनों थे, मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा यार बाप तो इतना डायनामिक है, आर्मी गाय, फर्म हैंडशेक, एंड मैंने कहा तुम एग्जैक्टली उनकी तरह थे. ये सक्सेस ऑफ एनिमल, जी, डू यू मिस हिम अराउंड नाउ? Terribly. But at the same time, this missing ka thing, I was very aware of the vulnerability of death पहले से ही, even before things went wrong. और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि आज फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि ये दिस इज द लास्ट टाइम दैट यू एंड आई गोना एवर मीट ईच अदर. Probably. Yes, it is as much a possibility as it is we will meet each other. If I consider that this is the last time you and I ever sitting and having a heart-to-heart with these fans, this moment becomes a lot richer for me, because I'm more invested in this time. I'm using death as a vulnerability of life, which is actually a motivator for living life, instead of being something morbid. तो वो नज़रिए के साथ मैंने डैड के साथ इतना समय बिताया, इतने बार उनको आई लव यू बोला, इतने बार उनसे आई लव यू सुना, राइट, कि आई डोंट नाउ मिस हिम.
इवन इन दीज टाइम्स मुझे पता है कि समवेयर अलोंग द लाइन इत्तेफाक से ये जो एनिमल का प्रोजेक्ट आया मुझे, इतनी बड़ी पिक्चर, इतना बड़ा ये हिट, 20 साल से मैं ऑडिशन करते रहा हूँ, 20 साल से मैं रीडिंग करते रहा हूँ हर पार्ट के लिए। ये पहला पार्ट है मुझे जब मुझे ऑडिशन नहीं करना पड़ा, रीडिंग नहीं करना पड़ा। इट वॉज बेस्ड ऑन माई प्रीवियस वर्क। एट सम लेवल ईगो है, गर्व है कि यस इट वॉज माई वर्क, बट एट सम लेवल आई थिंक माई डैड इज वर्किंग इट फ्रॉम देयर। He was always a busy man. He hated to see me sitting at home. Like, अच्छा बेटा कुछ नहीं कर रहा, ले और काम कर. So that's how I think his presence I feel still. 2018 में you lost him, right? 2020, COVID. Yes. Wow. You know what? I think I'm going to call my dad up right now after this. Seriously. हालांकि मैं भी बहुत expressive, मम्मी पापा को तो मैं हमेशा I love you, I bite my mother's cheeks, I do all that. But it's a beautiful message, brother. I love this. Like even when I step out to work, मेरी एक ही philosophy है कि it's my first and last day at work. When I meet you, I feel it's the first and last time I meet you. क्यों first time? क्योंकि childlike excitement है यार, सिद्धांत से मिल रहा हूँ यार. I feel excited like a child. ना पहली बार you feel excited. And last time वो emotional connect होता है. So in my head also I've always kept this philosophy: first and last time. काम हो, personal life हो, first, last. Oh wow. And I resonate with your thought process. That's taking it to the next level. मैं तो last देखता हूँ, आप first भी देखते हैं, last भी देखते हैं. So that excitement of that inner child है. Brilliant, sir. Thank you. That resonated with me. I'll learn something. Sid versus Sid. Sid versus Sid. Not versus Sid with Sid. भाई आदि पुरुष तुमने की, राइट? जी. वो रोल में तुम थे, तुमने किया, फिल्म नहीं चली. जी. हालांकि वो लार्जर देन लाइफ फिल्म थी, बहुत टाइम से उसका प्रमोशन चल रहा था इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग इट अप वगैरह वगैरह. जब वो वर्क नहीं हुआ, यू फेल्ट लेट डाउन? आई डिड फील लेट डाउन. जितना भी मैंने अपने आप को बोला था कि मैं अपने एक्सपेक्टेशंस लो रखूंगा, जितना भी मैंने बोल रखा कि ओके दिस डजंट वर्क, नो प्रॉब्लम, एक वो होता है, वी आर ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे. बट दैट टॉट मी देयरफॉर व्हेन एनिमल केम टू बी वेरी न्यूट्रल टुवर्ड्स इट, ताकि out of the fear of not getting depressed or upset, I am not really even enjoying the highs of it. तो मैं ज़रा न्यूट्रल में रहूँगा इसके साथ भी, वो सीख लिया है मैंने. तो एनिमल के साथ तुम न्यूट्रल रहे? न्यूट्रल रहो. पर आदि पुरुष तुमने बिग कमेंट भी कहा था. यू सेड वी नीड टू शो गॉड्स आर कूल, राइट? यस. क्या तुम्हें लगा कि इंडियंस पर से कूल गॉड्स के लिए रेडी नहीं थे supposedly with आदि पुरुष? That's why it went wrong? I think that is one of the reasons maybe. There are many reasons. This was one reason which was needed for Adipurush to come out. Because कितने बार मैं देखता हूँ बच्चे थॉर के टी शर्ट्स पहनते हैं, सुपरमैन की टी शर्ट्स पहने, स्पाइडरमैन की टी शर्ट्स पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ. पर at some point, I want like this cool graphical Hanuman का t-shirt I want to wear. I want to wear a cool graphic t-shirt of Vibhishan, you know, of Ramji, because these are our gods, these are our superheroes. हम बस उसको सही तरीके से package नहीं कर रहे हैं for the younger generation. There is still a certain amount of unachievable accessibility which is there with the texts of that time. सबसे बढ़िया चीज़ मुझे आदि पुरुष के बारे में इस बात लगी भी, 2 बार पहले ज़िंदगी में मैंने रामायण पढ़ने की कोशिश की थी और बहुत इनएक्सेसिबल रहा मेरे लिए. पर जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी सर के ऑफिस में बैठ के, मुझे एक इतनी साधारण सी ब्यूटीफुल कहानी लगी कि आई सेड वाओ, फाइनली समवन इज सिंप्लीफाइड इट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड रिसीव इट बेटर. आई एम नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी वोरेशियस रीडर, नो, बट एंड दीज आर वेरी हैवी टेक्स्ट्स टू रीड. महाभारत आप पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल काम होता है. इट्स नॉट एन ईजी रीड. But this was an attempt to make that message an easier one for the younger generation. However, the older generation had their own expectations out of it, and that's why it may not have delivered. But I feel it's very interesting क्योंकि films और theatre में शायद उसने सही तरीके से perform ना किया हो, लेकिन अगर जब OTT पे आई तो दोनों OTTs पे, from Netflix, it was trending on #1 for 4 weeks, on Amazon with the Telugu version, Tamil version, all the South version, it was trending on #1 for 3 weeks over there. So there is a disparity in what is a good film and how it's being received in theatres and how it was received in OTT. So I thought it was still interesting to observe that. बहुत सारा battles चल रहा था when Adipurush came out. A lot of people went against it, say यार कैसे heroes को, हमारे gods को ऐसे दिखा रहे हैं. बहुत सारा viewpoint था, backlash आ रहा था. It was very very strong. तब तुम घबरा गए थे? नहीं जी, क्योंकि मेरे तरफ तो कुछ डायरेक्टेड था नहीं. I'll be honest with you.
It's a very sensitive area to play with gods in Indian cinema. Because we are very protective of our gods. If we project them in any way other than how the masses see it, we will get a backlash. This is what Adipurush has proven. हमारे मन में अभी भी वो सिपी जी की महाभारत रामायण established है. तो we understood, right? It is a very good case study. जैसे कि आपने कहा पेपर में it's a hit film. You have the biggest star of India, Prabhas, starring in it. Saif Ali Khan is there. Om Raut sir, such a big director. 3D film. T-series is putting what 500 crores in the making, 400 crores in the making. On paper, it was a super hit. But over the weekend, it was a hit, and the week started, it started dipping. And if we are using box office as a determination of the success of a film, it wasn't doing well. But then when it came on OTT, it did really well. I got tons of messages afterwards. अरे यार, picture अच्छी थी. लोग पता नहीं क्या कह रहे थे. I quite liked it. So it's interesting, you know, the variations. If you want to use a box office as your meter, or do you want to use data on OTT platforms, OMAX ratings audits as your thing? It's up to. भाई तुमने 2-3 बार ये वर्ड यूज किया, डिप्रेशन. जी. कभी उससे गुजरे हो? काफ़ी बार. और अभी I wouldn't say look forward to depression, but I see it in a different manner. I think depression is the body's way of saying that there is something seriously wrong with the lifestyle that you're living. इसलिए सब कुछ शटडाउन पे हो गया. सही तरीके में जब मैं डिप्रेशन में था, नॉट ओनली माई थॉट्स, आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इवन रेज माई हैंड. आई रीच दैट लेवल ऑफ डिप्रेशन, एंड दिस इज द टाइम कोविड चल रहा था. डैड हॉस्पिटल में थे, ICU में थे. इट वॉज ऑल वर्क वॉजंट हैपन. वी ऑल वेंट थ्रू आवर डिफरेंट जर्नीज ड्यूरिंग कोविड एंड द लॉकडाउन्स. तो उस समय आई फेल्ट व्हाट एक्चुअल डिप्रेशन वॉज, एंड इन फैक्ट आई चैनलाइज्ड इट देन. मैंने अपने आप को कहा कि अगर मैं ट्रूली अपने आप को एक आर्टिस्ट समझता हूँ, तो आई शुड बी एबल टू यूज द टूल्स दैट आई यूज इन एक्टिंग इन माई रियल लाइफ एज वेल. एंड देयरफॉर इफ इन माई रियल लाइफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, आई यूज द टूल्स ऑफ एक्टिंग एंड एक्सप्रेस इट आउट. और उसी के ज़रिए मैंने एक गाना लिखा. गाना काफ़ी रेजोनेट हुआ लोगों के साथ. और अभी इनफैक्ट लास्ट दिसंबर डायरेक्टर हैड वर्कड विद इन फ्रांस, Jean-Louis Carrasco, he reached out, and now we are making it into a feature film. It's a subject, it's an Indo-French collaboration. I'm co-writing it and producing it. Co-producing, produce नहीं कर पाऊंगा. तो यानी जो तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट था लाइफ में, तुमने उसको अपना हाई पॉइंट बना लिया. अब देख, अभी we have to see sir, कहाँ जाएगा. But at least you tried to make it a high point, yes, right? Yes. पर थेरेपी नहीं सीख किया तुमने उस वक्त? बहुत. I've always been going to therapy. I've been a child who's needed therapy, especially when it comes to the relationships in my life. तो I'm all for therapy. और थेरेपी के ज़रिए ही I realize कि there are other tools also. Simultaneously with speaking to a professional, मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगता है about therapy ना, it is guilt-free time to indulge in my own problems. आप कितने भी करीबी दोस्त के साथ बैठो, उससे अपनी डिप्रेसिव चीज़ के बारे में बात करो. कहीं ना कहीं मुझे ये ऑब्लिगेशन लगता है कि अच्छा भाई तू बता तेरे लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, right? And my energies then get dissipated from my problems to his problems. But when you're talking to a professional, I am guilt-free that I'm only talking for 1 hour about my problems, and that person is dedicated to give me the tools to help me in my life. So it's a very good thing. I think everybody should do therapy. साला तू बहुत इवॉल्व है रे. अरे नहीं सर. I love it. माने मुझे इंटेलेक्चुअल ऑर्गेज्म हो रहा है इस वक्त, and I mean it. Enough. Orgasms can't be platonic, but here it is platonic. But I love it, brother. तुमने कहा relationships, right? बहुत सारे रिश्ते टूटे? जी. दिल बहुत बार टूट चुका है. क्योंकि तुम बहुत easily प्यार में घुसते हो उस वजह से? हाँ, वो भी एक वजह है. मेरे करीबी दोस्त मुझे बोलते हैं मैं सैफ अली खान फ्रॉम दिल चाहता हूँ, और सही मायने में जब प्यार करता हूँ तो फुल ऑन गिर जाता हूँ, और चोट भी बहुत लगती है. फिर अभी सीख रहा हूँ ज़रा टाइम लेके, होल्ड बैक अ लिटिल. तुम बहुत ज़्यादा देते हो रिलेशनशिप्स में. जी. यू गिव अ लॉट. जी. प्रॉबेबली अपने कंपेनियन से ज़्यादा. वुड यू से दैट? नो, आई थिंक आई बीन वेरी लकी इन. बहुत इंटेंस रहा है. आई बीन इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ऑल्सो. आई बीन इन वेरी इंटेंस रिलेशनशिप्स ऑल्सो. So I think we both give a lot, and then we both expect a lot also, and that's where it starts to dwindle down.
टॉक्सिक रिलेशनशिप माने क्या होता है उसमें? व्हाट हैपेंड विद यू? Verbal abuse, physical abuse, mental abuse, family से दूर रहना, मेरे खुद के family से, I'm very family oriented person. Fundamentals and values पता चले कि we were different, and that brought in, you know, instead of putting it out there कि where the other person went wrong, I'd like to reflect back on where I went wrong in. और प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ ही कि मेरा अप्रोच उस वक्त गलत था, और मैं अपने आप को गलत भी नहीं मानता क्योंकि एट दैट टाइम आई हैड ओनली दैट मच नॉलेज टू डील विद. तो आई एम काइंड टू माई सेल्फ ऑल्सो सेइंग कि इन दैट टाइम आई डिड द बेस्ट आई कुड, भले ही दे माइट हैव बीन द रॉन्ग डिसीजंस, द रॉन्ग एक्शंस, बट इट शेप्ड मी टू हु आई एम टुडे, एंड आई थिंक आई लाइक हु आई एम टुडे. जब तुमने कहा फिजिकल वर्बल अब्यूज, दोनों साइड से हो रहा था? Nahin, it was one-sided. And I think that's what also helped me in portraying Anik in Made in Heaven. I played this very abusive, toxic partner. So I learned that from the relationships that I was in, and I projected that. I don't want to, out of respect to those who, sure, but it was, we as actors, we observe, especially these things, and we put it out there. And the more honest our observations are, the more honest our performance will be. And I think that's where Anik in Made in Heaven really resonated with a lot of people. It was very nice क्योंकि ये आपने देखा होगा Made in Heaven. मिसोजिनिस्टिक मैन है आप उसमें. हाँ, पर उसमें भी मुझे काफ़ी सारे DMs बाद में आने लगे. Not just like one really outstanding DM was that a guy reached out to me and he said, you know, you're showing a guy being abusive towards the woman. There is a time when in my marriage where my wife is being abusive to me. Why aren't you talking about the other side to it? हमें दिखाते हैं कि मेल ही violent होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं है. It's a partner who could, one of the partners is toxic to the other, right? So it was nice to reach out and know that I'm not alone in that feeling. And I think for men, it's even more difficult because we are always living to this masculine, macho, alpha thing. लेकिन जब हमें पड़ती है, हमें शायद physically ना लगे, लेकिन दिल पे लगती है. And it becomes even more difficult for us to come out of it. भाई ये तुम्हारे सारे relationships toxic थे? नहीं, सारे नहीं, 2-3. और 2-3 में सब फिजिकल वर्बल सब अब्यूसेस वो सब 2-3 में हो रहे थे? हाँ, माने एक पैटर्न था. पैटर्न था, मेरा पैटर्न था. देखिए, मुझे रियलाइज हुआ कि आई लाइक टू प्ले द नाइट इन शाइनिंग आर्मर, एंड आई वुड गो टू रेस्क्यू द गर्ल्स हु डिड नॉट वांट टू बी रियली रेस्क्यूड, और उसी में आई ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, बट इट वाज रॉन्ग. दैट वाज द टॉक्सिसिटी आई वाज ब्रिंगिंग टू द रिलेशनशिप, trying to find my meaning by giving you a meaning. But if you have a different path and you refuse it, then I am being baseless with my need. So it was interesting for me to understand what my patterns are and where I was going wrong. You know, so thankfully I've been married beautifully for 10 years. Arranged marriage, but got a great girl. So thank you, Neha. Thank you, Neha. But before that, जब मैं 20s में था, I have a confession. I used to genuinely like girls who had complicated lives. I really did. So right पे, I know there's this girl who's very simple, who really likes me. And left में there's a girl who's very complicated with her life. मैं डंग वहाँ जाता था. And repeatedly, till one day, मैंने अपने आप से बोला, यार, अब hold back Siddharth. So I started hanging out with my guy friends, you know, going video games, playing tennis and doing the guy things. तो हालांकि आज के ज़माने में कोई guy thing नहीं होता, it's not there, but you know what I mean. Yes, hanging out with the boys. Yeah. That's when I realized what I wanted, which is simplicity. And then when I took that time for myself, I started searching and seeking simplicity, and it happened to me as well. आप married थे मेगा गुप्ता के साथ, आपका divorce भी होता, वो एक actress भी थे. जी. आप touch में हो? नहीं. Chapters closed. That was a tough one, huh? That was a tough one. उसके बाद bounce back करने में कितना time लगा आपको? 3 साल. 3 साल? Yeah, I actually have not been able to get
into a proper relationship ever since my marriage, divorce. Try kiya hai. Often I've gotten very choosy as well, but for some reason or the other, it just doesn't work out. And I'm consciously trying to find the simplicity, finding stability in that. But मिल नहीं रहा. कितने साल पहले आपका डिवोर्स हुआ? 2020 the divorce papers came through. तो माने 3 years approximately आपने अभी तक कोई रिलेशनशिप में आप गए नहीं? नहीं जी. Actually, it's a good thing. It's a very good thing. It is. Trust me, भाई. Because अब mind, heart, clean slate पे आ रहा है ना, right? ये मैंने एक बहुत ही अच्छा सदगुरु का एक वीडियो आ गया था. We are always seeking for answers at that troubled time. और ये 2020 February में my divorce came through. 2020 July में dad passed on. It was an extremely depressive year, like the worst year of my life. और उस समय वीडियो देखा था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो void होता है अपने लाइफ में, ख़ास करके जब एक पार्टनर चली जाती है या फिर एक पेरेंट चला जाता है, तो एक उस void को फिल करने के लिए हम दूसरी चीज़ें डालते हैं. But instead of doing that, you should fill the void with yourself. Be full in yourself. Because the other thing to that is जब आप दूसरे relationship में जाओगे, you will not take the baggage that I am carrying into the next one. And I had to be fair to the next relationship that I go to. तो मुझे लगा कि first मुझे खुद को heal करना बहुत ज़रूरी है. To be fair to the other person. Forget myself, but just that. तो 3 साल तो बहुत छोटा समय होता है to actually at least time is relative. आपको 3 मिनट लग जाए, मुझे 3 साल लग गए और शायद और भी टाइम लगेगा. But I'm seeking to be in a simple, stable relationship with somebody. But at least I'm open ho for companionship, right? Oh, yeah, I'm dating. I'm swiping right on everybody. Tinder zindabad. How nice, yeah. How nice. Yeah. It's a good phase, right? You know, imagine eye to eye Ranbir ke saath Animal mein. Yeah. And every character has hit the rooftop, bro. किसी का 2 मिनट का रोल हो, 5 मिनट का. पर मेरी टीम का एक ऑब्जर्वेशन है. अच्छा. तो मैं बोलता हूँ. Please. Okay, this is lovely. तो मेरे टीम वाला एक बड़ा बदमाश है, वो बोलता है when रणबीर कपूर's character आपके कैरेक्टर को किल करता है in the film. रणबीर has orgasmic satisfaction in his face. उसका ऑब्जर्वेशन ये है कि रणबीर के पास orgasmic satisfaction है. तुमने नोटिस किया वो? अभी मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने कहा हाँ यार, हाँ. I think wow. I'm constantly being brought back to मुझे मारने के बाद when he shoots me twice. Did he come twice? यही पूछने की कोशिश कर रहा. नहीं, जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मैं लेटा हुआ नहीं था जब वो शूट कर रहे थे. मैं जरा तो मैंने देख नहीं पाया कि what was Ranbir doing, but I think he did it so well that maybe the character that he was playing got some amount of sadistic pleasure out of it. I think so too. I think it's so a great too. observation. Absolutely fantastic. It's and I'm sure Sandeep sir at some level had that, you know, because the character itself is disturbed in not only his sadism but his sexuality as well, and how he finds orgasmic pleasure maybe in sadistic things that he does, right? And that works with the character. So maybe that's something that was done. I think that's the beautiful thing about art. You know, you put it out there and people get different things. So agar in this person of yours resonated with that in a way, then that's great. That's great. No, but these are debatable points. This is great. Yeah. क्योंकि बहुत कम फिल्मों में theories निकलती हैं. Very few films have theories. ये theory वाला point of view. Coming back, yes or no? You felt he got orgasmic while killing you, or after killing you? No. I think he went through a period of calm, because that was one thing he wanted to do to avenge his father's thing. And it's one of those checklist things, no? जब we work towards something for 8 years, you work towards it and you take that checklist off, there is a sense of peace that comes. There's a sense of peace that comes in your orgasm also. I cannot deny that, but that you'll have to ask Ranbir actually if he went through it. तो ये किसका आइडिया था? ये संदीप का था कि रणबीर का था? ये क्या था ये? Yeah, I think Sandeep sir का था. It was his vision. It was his vision also to take the gun and shoot the character twice. Because मर गया अभी.
और कितना मारना है, और 2 बार मारोगे to make sure he's dead. Like that is the track of Ranvijay that's going through. Yeah, I thought that's beautiful. यार संदीप के साथ भी ये बहुत सारे मुद्दे, बट आई वांट टू डिस्कस इट फ्रेंड टू फ्रेंड. Absolutely. जैसे वो बोलते हैं, रणबीर बोलते हैं तृप्ति को, द क्रश ऑफ द नेशन, कि लिक माई शू, इफ यू लव मी शो मी. वो आती हैं, अबाउट टू लिक हिज शू एंड ही वॉक्स आउट. बहुत से लोग कह रहे दैट सैडिस्टिक, मिसोजिनिस्टिक, बहुत फ्लैक मिल रहा है संदीप को उस वजह से. वो कैसा लगा वो सीन आपको? मुझे भी जब मैंने देखा मुझे अनसेटलिंग लगा, पर जब मैंने उसके बारे में सोचा, आई थॉट व्हाट अ वंडरफुल चॉइस टू मेक. राइट नाउ यू एंड आई आर टॉकिंग अबाउट दैट सीन इन द फिल्म. As entertainers, storytellers, we will make choices that stand out from conventional films, conventional choices, right? You and I are talking about it as an entertainment choice, it is damn good. Right? It's unsettling. It's made you and me feel like shit, that's wrong. But that's why we go to watch films, to make us feel. That's what art is about. Art is supposed to make us feel. Good art is supposed to make us feel intensely. Now, whether that be good or bad, that's about how I react to it. What is my mental state as an audience jab main dekh raha hu. But the fact that he made that choice, which is unconventional, he could have said anything. He said, kiss my hand, all right? Or go down, give me something. Give me a blowjob right now, for example. He could have said anything. He said, come lick my shoe. Fair. She came down. Did he allow her to? We don't know. He left it there. You know, I think those are very interesting choices as a filmmaker you're making. And I think that's great. You make those interesting choices. Because you're there to be entertained as an audience. I'm paying to be entertained. No, a lot of people जो देखते हैं ना, वो अपने रियल लाइफ पे रिलेट करने लगते हैं. उनको लगता है यार बहुत से लोग होंगे जो इंस्पायर भी हो सकते हैं. They might end up telling their girlfriend this. तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि that way, though, anything and everything, people can start getting inspired. Yeah. That way, you do a gangster film, a guy shooting another person could also make you. Yeah. I think what you caught is the right thing, but maybe instead of the word inspired, I think I would say the word triggered. I think people might already have that pre-existing condition, और ये देखने के बाद वो trigger हो जाते हैं, right? Here at no point, right down from रणबीर कपूर ने भी पिक्चर के पहले प्रमोशन के टाइम ये बोला था कि if you get triggered, don't go watch this film. This is a film which will disturb you, and if you're not ready for that, you tell me which A-lister star tells the audience not to go watch this film. Imagine the maturity that's coming over there कि भाई ये है triggering, आप मत देखो. Disclaimer दे दिया, उसके बावजूद आप जाके देखते हो, trigger होते हो, and then you're putting it back, that's wrong. और also आपको probably अपने audience लोगों को बता दिया what's in store. जी. Right? It's like a certificate आता है फिल्म से पहले जो कहता है यार 18+. You know what's in store, right? Correct. So that's what it is. That's what I also, there's this other scene which I found really interesting. जब Rashmika and Ranbir are there and he pulls out on a brass strap. You know, he keeps pulling it to the point and उसके next scene के बाद वो मरहम लगा रहा है वहाँ पे. What is that showing? Some people are taking it, oh, this is how it is, you know, this kind of, he's promoting this kind of sexual behavior act. I took it as that is their relationship between the two characters. एक sadism और एक masochism होता है, right? As sexual preferences between people. If two people have come together and for 8 years they've been practicing something which is behind the doors, which works for them, might not be moralistically good for the crowd of it, but it works for them, then that is for them. Who are we to judge them on what their preferences are? Here he's highlighting that that is the preference between these two characters. No, at one point as Sandeep Reddy Vanga ever said that this is how you should be. In fact, मैं तो ये कहता हूँ, वो सब बोल रहे हैं कि ये misogynistic, alphaness जो ये promote किए जा रहे हैं, कहाँ promote कर रहे हैं? उन्होंने एक character दिखाया जो alpha हैं, जो misogynistic हैं, and see where his life has taken him in the end. He landed up not really being a happy man. His family is gone. He doesn't get forgiveness from his father. He's a deeply disturbed man. Is that what you're trying to be as an alpha? He's showing this is the path of an alpha could be. तो ये आप उनको क्यों blame कर रहे हैं कि he's not saying that you should be like this. He's showing a character who is like this, who has landed up like this. Right? So I think we're taking things out of context. No, absolutely, because बहुत से लोग कहते हैं यार संदीप वांगा ये encourage कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. At the end of the day,
I mean, it's in your hands what to take and what to not to take, right? You know, we are discussing his art. I'd like to discuss his life, which not many people know about. What is that? His brother was telling me how when they started his filmmaking career, he was assisting people, उनको कोई job नहीं दे रहा था, not as a director in his own film. He finally got a company, friends together. Just a month or 2 weeks before, his finances backed out. He was 1.6 crores short of getting this film on. His family got together, sold their ancestral land. 36 acres of mango ancestral farmland was sold for 1.6 crores to fund his movie. His brother Pranay, who's there also the producer, he came down from the US, IT job over there, left his family there, came down over here to help his brother make a film. His entire family is full of balls, courage. I don't have the courage to put my money in my own film. They all got together, put the money in this man. He made Arjun Reddy, which became a hit. His second film was with Shahid Kapoor, crossed 100 crores with Kabir Singh. His third film is with Ranbir Kapoor, crossing over 800 crores today. His next film is Prabhas. Look at the trajectory of this man. हम इसकी बोल रहे हैं, his art is so bad. Okay, fair. You can judge his art. Look at this man's career and life, how he's taken it. That takes courage. I learned from that man courage. I learned from that family what it means to sacrifice, to give a chance. We're in an industry where we don't get that many chances. You have a family who backs you up, sells your farmland, sells all this. We believe in you, you make a film. Let's be encouraged by that now. इनफैक्ट तुम्हारा जो बैकग्राउंड स्कोर है, जब रणविजय तुम्हें खत्म करता है, राइट, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. जब तुम फिल्म देख रहे थे और जब वो सीन हो रहा था, तुम्हें लगा था कि बैकग्राउंड स्कोर उस लेवल तक एक सीन को एनहांस करेगा? सर, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पहली बार संदीप सर से मिला था 2 साल पहले पिक्चर बनने के, उन्होंने मुझे बताया था कि जीजा जी का रोल है. जीजा जी सुना, हमने, ब्रो आई डोंट वांट टू प्ले जीजा जी, बट कम ऑन, इट्स अ ग्रेट फिल्म, आई विल डू एनीथिंग यू गिव मी, राइट? Then he narrated this scene to me, this strangling scene. He played this song, sir. ये गाना उनके पास पहले से pre-recorded था in the exact form that it was played right now 2 years later when I saw it for the first time. I again marveled at that man's vision. 2 साल 3 साल पहले ही he knew exactly background music क्या होने वाला है in this scene. He explained the entire scene to me. He told me कि कैमरा ऊपर होगा, 90 सेकंड का शॉट रहेगा, कैमरा ऐसे घूमते रहेगा, Ranbir would be like this strangling you and it's a one shot for 90 seconds. And that's exactly what he did. You want to work with a director with that clarity and thought and vision. 2 years later, when I sat down in the theater, the premiere, I saw that and I heard the background music playing to that same song that he made me listen to. I said, that is genius. That is a man we need to support. This is an artist coming out from our industry who we need to support his voice because he's got such a unique voice, such clear vision and talent. You want to have a coffee? आजा है, पिक्चर जब भी जाता था वो नीचे जाता मेरा. Superb, dude, Sid. Fucking insane shit, man. Amazing. You're asking some beautiful questions, sir. कितना organic है ये तो, it's... Thank you, Mohammed. It's amazing, man. I'm fucking loving this, yeah. Theories, everything, superb, amazing. You know, I also, when I watch Animal and all, I'm just watching it genuinely for entertainment. Can you please keep this rolling? I'd like to, you're giving some very good rolling. So, I like the film because I just saw it from and a film which is very entertaining. And that's it. मैं आया, मैंने कहा ओए ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और मैं निकला. जैसे आप अवेंजर्स देखते हो, आपके पास थियरीज होता है जी, और फिर दोस्तों से गाड़ी में बैठ के आप बात करते हो कि यार साला ये क्या, ये हुआ, ये क्या हुआ, इसका क्या था, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ. मैं ये नहीं सोच रहा कि अच्छा डायरेक्टर अपने रियल लाइफ में ये कर रहा है और ये इंस्टिल कर रहा है. तो वैसे तो आप कोई फिल्म लाइफ में देख ही नहीं सकते हो ना बाबा. यू कांट वॉच एनी फिल्म देन. Absolutely. Because at the end of the day, if you think real life, so all you have to do is then you have to make Rajshi kind of films, which is not bad, but every film will be like that, na? Yeah, absolutely. Good art is what makes you go back and have conversations about. That is what I. जब मैं theater करता हूँ, plays करता हूँ, I love it when people go back and have dinner and talk about the play or this thing. That is when I know I've done good art.
देखा भूल गए, that's disposable shit. It's like a condom. Use it, tuck, throw it. You make love. You talk about this foreplay. There's excitement to go to watch it. You watch it, you come back, you finish, or you still talk about this. और क्या होता है ना भाई, pushing the envelope. अगर आप इतने सारे चीजें बोलते रहोगे, करते रहोगे, you're pushing the director against the wall. I'm sure संदीप तो brave है, strong है, जिसने कहा ballsy man है. पर बाद में बहुत से लोग घबरा के वो सिर्फ टिपिकल चीजें बनाने लगे. जी. You want different content. You want people to push the envelope. You want people to break boundaries. And हम लोग अलग क्या कर रहे हैं? जब वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, फटाक. You screw the person up, yeah? You said it so right. You said it so right. You know? Tripti. You had a crush on her too? Yeah. I still do. So listen, why don't you ask her out, yeah? अरे यार, थोड़ा मैं डर जाता हूँ यार. I don't know. I'd love to ask her out, but डरता क्यों? अच्छा, you can always I'm say a little shy. अरे यार. I'm working on another project. I was working in Afghan Snow, वहाँ पर भी, but this, I don't know, it's not organic. We didn't. तो आप उनके साथ उस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो? उसमें भी, yeah. तो दोस्ती नहीं की क्या? हम लोग के शूट डेट्स साथ में नहीं रहे, तो I didn't get a chance to really talk to her. ये एनिमल में शूट डेट साथ में नहीं. दोस्ती हुई है तृप्ति के साथ? हाँ, क्योंकि जिस दिन मैं शूट कर रहा था वो स्विमिंग पूल सीक्वेंस कर रही थी, and I could make out she was nervous, no? Poor thing's going to be in a bikini in front of a big set and everything. So I didn't want to take, hit on her at that time, so to speak. But I admire that girl, yeah. What a wonderful trajectory she's had, and she's a lovely girl, yeah. जो थोड़े moments of गुफ्तगू की बहुत प्यारा रहा. भाई, I think she is so amazing. She is lovely. Really. और मैं ये भी कह रहा हूँ, भाई, you have nothing to lose. You're a smart guy, good guy. Maybe आप मैसेज करते हो तृप्ति को और बोलो, तृप्ति, you know what, I'd like to have coffee with you. अरे with the millions of followers she has, मेरे DM कहाँ देखेंगी वो? तो तूने शूटिंग का नंबर नहीं लिया? अरे नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ, मैं शाय हूँ ना, इन चीज़ों में नहीं होता मुझसे. तू इतना शाई है क्या? क्यों इंटिमिडेट फील कर रहे हो इसके साथ? Intimidate नहीं, just I feel shy. It's not about what she does to me. It's about how I'm not able to do something. If things went the way, would you like to date her? Yes, I would. Yes. तो मेरा एक philosophy है यार. You're a dignified boy as far as I know, right? Yeah. There's no harm in asking a girl for a coffee. देखो मूवी स्टार है, अब इतनी फॉलोइंग हो गई, पर इंसान तो है ना डीप डाउन. जी, एब्सोल्युटली सही. सब लोग तो इंसान ही तो है ना यार. जी, और इंसानियत के तौर पे ही तो मिलना है. ये थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बनना है, शादी बननी है. जस्ट वांट टू गो मीट एंड हैव कॉफी एंड जस्ट टॉक. आई लव दैट. या एब्सोल्युटली. सो ऐसा थोड़ी है कि तुम जाके बोल रहे हो, अच्छा आपके क्या कॉन्टैक्ट्स है, मेरे क्या कॉन्टैक्ट है, ये सब कुछ नहीं. सो रिमेंबर, बिग ब्रदर फीडबैक. यस सर. एट द एंड ऑफ द डे सब इंसान होते हैं. जी. Tomorrow, if she did not become the Tripti Dimri, maybe if you met her somewhere with your friends, you would have probably said, हाँ number दे दो, हाँ. You would have done that, no? I wouldn't have done that. मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत शाय हूँ यार, नंबर नहीं मांगता मैं इतनी जल्दी से. But I wait, yeah. But now I shall. Thank you, big bro. I will. Nothing to lose. I'll DM her, man. I'll see if she replies. I'm serious. I'll I genuinely mean that. Or try and get a number and you can send her a message. I mean, at the end of the day, इंसानों को, महिलाओं को पता है कौन सा लड़का सही है दिल से, उनके वाइब से, और कौन सा लड़का गड़बड़ उठाने वाला है. तेरे में अच्छाई है, रिस्पॉन्ड करेगी. ज़्यादा बिजी बोल देगी यार. यू ट्राइड ना ब्रदर टू एटलीस्ट मीट फॉर अ कॉफी. ये ना हम इसका एक रील बनाएंगे, हाँ, and we'll send it to Tripti Dimri where Sid K is playing Cupid and trying to get us. Bro, that's the only angle I can think of. यार नंबर मैं नहीं मांग सकता, लेकिन ये इससे बड़ा टेस्टिमोनियल और क्या हो सकता है. तो चलो ये हम लोग बनाएंगे इसका रील. संजय बॉयज, इसका पक्का हम लोग ये डालेंगे. बट टू द नेशंस क्रश, एक कॉफी तो बनता है यार. चलो कमेंट्स में डालो, वुड यू लाइक सिद्धांत टू हैव कॉफी विद तृप्ति? दिल से बोलो, जस्ट कॉफी. तो व्हाट यू वांट टू टेल तृप्ति? उनको भी डीएम मारो अभी आप सब लोग. आई रियली मीन दैट, बोथ ऑफ यू. वाओ, सुपर. बट यू नो व्हाट, कुछ लोग कहते हैं कि रश्मिका could not get the importance of the film because of Tripti. Oh yeah, I don't. Okay, I don't. नहीं पता चला? नहीं.
But You abhi, feel like that? now that you ask me, I think no, everyone got our own importance. Maybe the intensity was different. For example, Bobby Deol came forward. How much time did he have? 4 minutes on screen or 15 minutes on screen out of a 3 hour? He's taken right after Ranbir. He's the next big thing we're talking about. The cousins, that pinned family. What a beautiful setup in the dynamics. They've just risen. Beautiful performances. So I don't think we as especially actors within the same project should be competing कि भाई popularity ज़्यादा किसको मिला. I think film does well, everybody does well. We're happy for everybody. No, but there are comments of people. They say, यार तृप्ति ने तो रश्मिका का जो importance था वो steal कर लिया, thunder ले लिया and all that. You don't feel like that. I don't. I feel absolutely fine in their comments. आप आने दो. जब हमें प्यार मोहब्बत मिलती है तो हमें ट्रोल भी मिलना चाहिए. It is a balance of things we must accept. So they are very fair in asking for what they want. So we all know, लोग कहते हैं कि संदीप वांगा रेड्डी misogynist है. They say this. नहीं, वो मैं क्लैरिफाई करना, वो मिसोजिनिस्टिक नहीं है. जो कैरेक्टर्स वो लिखते हैं शायद मिसोजिनिस्टिक हो सकते हैं, पर वो खुद मिसोजिनिस्टिक नहीं है. क्या उनकी बीवी ने आके बोला ये? नहीं ना. Why are we creating a personality out of the art that man does? Why can't we separate the two? Why are he's building a fictional character. Why are we saying that is Sandeep Reddy Vanga? No, he's तो उनको लगता है इनके दिमाग में ये चल रहा है ना, तो माने ये ऐसे ही होंगे क्योंकि ये ऐसी चीजें लिखते हैं. ये हम लोग का perception है ना. Actually, I can be completely detached from the character that I'm writing. ये जो Hannibal का character लिखा था Anthony Hopkins ने जिसने किया था. Do you think the person who wrote that was actually a cannibal? भाई पर देखो अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह जी. उनको फ्लैक मिला बट द फिल्म डिड ग्रेट. Yes. उसके बाद इफ यू नोटिस वायलेंस हो, मिसोजिनिस्टिक अप्रोच हो, उन्होंने और पुश किया. जी. ही इज रियली पुश्ड इट. जी. एनिमल पार्क में दे ही सिंह मैं और भी पुश करूंगा. Absolutely. डू यू थिंक इट्स लाइक एन ओपन स्टेटमेंट टू क्रिटिक्स कि भाई तुम जो बोलो तुम बोलते रहो, और ये लाइक रिवेंज है टू द क्रिटिक्स सेइंग आपने वो क्रिटिसाइज किया, लो मैं ये दे रहा हूं, ये लो अब देखो तुम, एंड ही स्टिल गेटिंग द नंबर्स, ही स्टिल गेटिंग पीपल टू द थिएटर्स. डू यू थिंक इट्स लाइक वन ऑफ द सैडिस्टिक थिंग्स जो संदीप कर रहे हैं क्रिटिक्स के साथ? I don't need to think. This is something that he's openly admitted in his interviews. But I feel it is not that he's doing it specifically to give a big kick to the critics. It is a byproduct of his. He loves to make these films. He's being allowed to make the films that he wants to make in the style he wants to make. And as a little thing, अच्छा तुम्हें ये लगता है this is violent? I'll show you what violence is. His violence has created, this is something to be so proud about, world #1 box office returns across the world. It beat Napoleon, it beat Hollywood films, it beat Chinese films, Korean films. आप चार्ट देखेंगे, Animal is world #1 in box office sales across the world. Beat that, yeah. इनफैक्ट बॉबी देओल जिस तरीके से उस इंसान को किल करते हो गिव्स हिम द बैड न्यूज. ओह गॉड, कौन से लेवल का वायलेंस है? डू यू थिंक संदीप ने बहुत ज्यादा ही पुश कर दिया वायलेंस के साथ? नहीं यार, I'm used to seeing this kind of. I think there's more violence in the cigarette smoking ads I see, जहाँ पे जैसे धूम्रपान हानिकारी and एक open liver and cancer. I think that is far more gory than the kind of films we watched. हमने हिंदी सिनेमा में शायद ये नहीं देखा होगा, लेकिन बाकी वर्ल्ड सिनेमा तो हम देखते हैं ना. वहाँ पे जब हम saw all these horror films like Saw and Chucky and all these things, जहाँ पे people are being massacred and all, why aren't we saying the same thing about them? Why is it that when one of us creates an international standard movie, we try to put him down? If that is the thing, we should also catch these other directors who are doing this and saying that they should ban this kind of films from coming in India. वही थिएटर में जहाँ पे एनिमल लगी है, वहाँ पे दूसरा कोई हॉलीवुड फिल्म चल रहा है जो और भी फार गौरी है, वही ऑडियंस जाके देख रही है, वो उनको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हमारा बंदा जब कुछ करता है हम उसे कह रहे हैं. That's being hypocrite. इनफैक्ट ये फिल्म जो है पटौड़ी बंगलो में शूट किया है. मोस्ट ऑफ रणबीर कपूर के कैरेक्टर तुम्हारे साथ जी. जो ब्रदर इन लॉ कॉन्फ्रंटेशन वो पटौड़ी बंगलो में होता है. जी. रणबीर कपूर के ब्रदर इन लॉ है सैफ अली खान. कोइंसिडेंस? पटौड़ी बंगलो में कॉन्फ्रंटेशन सीन इन एनिमल, रणबीर कपूर्स कैरेक्टर विद ब्रदर इन लॉ.
सैफ अली खान का पूरा पैलेस है, तो ये कोइंसिडेंस लगा तुम्हें? अभी जब आपने इसका जिक्र किया दैट्स व्हेन आई रियलाइज, मैंने कभी सोचा नहीं था, शायद इस वजह से आई लव जीजा जी। है ना? इनफैक्ट बहुत से लोगों ने मुझे ये तक कहा है कि तुम सैफ की तरह लगते भी हो, दिखते हो। यू बीन टोल्ड दैट? Yes, I was cast in Adipurush because I looked like Saif Ali Khan's brother, इसलिए मुझे विभीषण का रोल ऑफर किया गया। I think that was a big thing, थोड़ा नवाबी अंदाज है मुझ में। रणबीर अभी तुम्हारे स्पीड डायल में है कि नहीं? स्पीड डायल पे तो नहीं है, बट नंबर सेव किया, उनसे नंबर मांगा, तृप्ति से नहीं मांगा। अरे यार, ये क्यों? उसमें तो शायद नहीं थे तुम यार। वो ब्रोज नो। एंड ऑल्सो बिकॉज अरे दिस वाज डैम फनी, हम लोग प्रीमियर में थे एंड इंटरवल हुई थी और आलिया खड़ी थी वहाँ पे, तो मैंने आलिया को जाके बोला, यू नो, आई जस्ट वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, व्हाट अ वंडरफुल हस्बैंड यू हैव, ही इज सो गुड, एंड आई वांट टू apologize. I think we had the most intimate time as well, because in that entire choking scene it was a very intimate spooning session that was happening, and she laughed obviously, and Ranbir was, I have a I have a crush on Ranbir. Yeah. What a guy, man. I think we should be openly admitting about bros crushes on bros. You know, what a guy. Like, I'm such a big fan of Ranbir. Can I tell you one thing? And I've always said this. Ranbir Kapoor's first interview in his life was with me for Savaria. Wow. And I'll tell you an incident, and believe you me, it's always been that till date. So, उस जमाने में रेडियो इंटरव्यूज हम लोग यूट्यूब या इसके लिए शूट नहीं करते थे ये सब, ये बाद में होने लगा। सो वन PR guy said, listen, this is first interview, तुम लोग 4-5 लोग लगा दो गेट पे, क्योंकि वो आ रहे हैं। एंड इस PR guy said, कर दो, मैं थोड़ा डिले हो रहा हूँ भाई, संभाल लेना। सो आई वाज सिटिंग इन द स्टूडियो, सो आई टोल्ड माय टीम, आई सेड ठीक है तुम लोग जाओ। Then suddenly I got a message saying, boss, he's reaching now. And I said, where the hell are you guys? They said, sir, we are in a shoot, ये जल्दी हो गया है। Would you believe, while I was talking, he walked in the studio and he smiled and he said, hi, I'm Ranbir. And I said, I'm so sorry, man. We were sending people to receive you at the gate. You know how at those days, radio jockeys, everybody used to dance when people used to come. And he said, it's good. I don't want that. I like this. Yeah. Then the PR person came, Siddharth, you know what? 30 मिनट में खत्म कर दिया यार इंटरव्यू। Would you believe the PR went to make a call? He closed the door. Wow. Tak, tak, tak. माँ कसम, he closed the door. And we spoke for 1 hour 45 minutes. Oh, wow. And from that day till today, he's still been the same. He's unaffected by fame. He's unaffected by money. He's truly India's nicest, most sorted and greatest actor. Because उसको समझ है what he wants from life. अब बाद में मुझे ट्रोल मत करना कि वो पर्सनल लाइफ में किसको क्या किया, वो मुझे मालूम नहीं, बट ये बट रियली वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इमेजिन सोशल मीडिया से दूर, nothing, he doesn't want all that, he doesn't want validation, he doesn't want अरे यार फॉलोइंग उसकी इतनी शिट, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है लाइफ में भाई? सिक्योरिटी है ना इतनी, अमेजिंग है, लाइक सो मच टू लर्न फ्रॉम रणबीर, है ना? सो मच टू लर्न, सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। अरे भाई, अरे यार कितना कुछ सीखने को मिल रहा है फ्रॉम यू। डिड यू फील दैट नाउ आफ्टर दिस फोन की घंटियां बज रही हैं, प्रोड्यूसर्स फोन कर रहे हैं कैसा? नहीं सर, they're not calling after this? No, I've not got any calls. I have no work, no shoots, nothing lined up after this. क्या बोल रहे तू? जी सच बोल रहा हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में भी बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं बेरोज़गार हूँ। यू नो, उम्मीद ये होती है कि इतनी हिट पिक्चर के बाद काम आने लगता है, काम भरपूर आने लगता है, लोग लाइन अप होते हैं, बट आई हैव नथिंग कॉन्क्रीट लाइंड अप आफ्टर दिस। एंड आई थिंक द फॉल्ट लाइज इन अस एक्टर्स, क्योंकि हम ही अपनी खुद की लाइफ को इतना ओवर ग्लैमराइज कर देते हैं, इतना एक ऐसा यू नो सक्सेसफुल इमेज देने लगते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कितने बार वी आर आउट ऑफ वर्क फॉर सच बिग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, दैट्स द नेचर ऑफ व्हाट वी डू। सो आईड लाइक टू पुट इट आउट देयर दैट आई डोंट हैव एनी वर्क आफ्टर दिस। इतने बड़े सक्सेसफुल फिल्म के बाद भी आई एम आउट ऑफ वर्क, तो इमेजिन द अदर्स लाइक अस हु हैव बीन आउट ऑफ वर्क इन सो मेनी टाइम, पर कहीं ना से तो कहीं तो काम आ जाता है। That's the beauty of our One thing Ranbir told you जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, वो क्या है? प्रीमियर के वक्त मैं अपनी माँ को लेके आया था
और माँ मैं बोला था कि अच्छा ये मैं इनसे मिलाऊंगा, ये सब होंगे वहाँ पे, एंड शी सेड क्यों रणबीर से नहीं मिलाएगा? आई सेड नहीं ऑफ कोर्स इफ ही इज देयर देन ऑब्वियसली एंड द फर्स्ट पर्सन शी मीट्स इज ओनली रणबीर. So he said, "Oh, hi Sid." He sees me, and then he sees my mom, and he said, "Oh, hello, auntie. Auntie, just want to say that your son is such a professional with such good etiquettes. It's been really good working with him." That stayed यार. जितना भी आप कुछ बोलो, माँ को अगर कोई अच्छा बोले कुछ ना, तो वो रह जाता है. तो थिंक दैट माँ सेंटी हो गई. माँ, मैं सेंटी हो गया यार. माँ तो या माँ तो माँ है ना. आप गाली भी दोगे फिर भी वो प्यार ही आएगा उनकी तरफ से. दैट इज नॉट अ गुड what you call माँ is unconditional love. You can't say. But for me that was a good moment. Pride. यार एक सीन है जहाँ पे तुम अपने वाइफ को फ्लिक करते हो सिगरेट. जब तुम गुस्से होते हो फ्लिक करते हो, राइट? यस यस. वो कहीं पर्सनल लाइफ से निकला था क्या वो? नहीं, वो संदीप सर के स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था क्या? वो लिखा था. That was scripted. Huh? That was scripted. Yeah. It was very, very troubling to do that scene. है ना? Very troubling. The only thing which got me, like Siddhant would never do that, and I therefore found it very troubling to do it to somebody else. But Varun as a character did. Saloni playing Reet as a character knew that this is going to happen. It was a professional setup, and we did it professionally. That is what we do as professionals when we are hired to do a job. She also knows when I'm flinging the cigarette to her that is what the scene demands. I am doing it because I know that is what the scene demands. It was unsettling, but that's where we are professional about it. रश्मिका के साथ ट्यूनिंग हुई कि नहीं? She's too sweet यार रश्मिका. है ना? बहुत इज्जत रखती है वो सबकी. सबको सर बुलाती है, सबको. तुमको भी सर बुलाया? मुझे भी सर. मैं बहुत बुरा माना. अच्छा भी लगा पर बुरा भी. ऐसे वहीं मेरा पत्ता कट गया. Oh God! So she called you Sid sir? She said, "Sir, so good to meet you." दिल बना और दिल टूट गया उसी मोमेंट पे. Okay, Rashmika on the right, Tripti on the left. If you got a chance to ask one of them out for coffee, con. You're being very difficult. बोलना. But I think Rashmika is seeing somebody, no? We've been told, yes, they say. Yeah. So then Tripti. Vijay Devarkonda. Then Tripti. Is Tripti single? So Tripti. यार मुझे लगता है वो सिंगल है अभी. वो थी रिलेशनशिप में supposedly. Yeah. And अभी सिंगल है. अच्छा. तो ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि रश्मिका सिंगल है कि तुम्हें मालूम है उसे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे. साले तेरे को मालूम है ऐसा? नहीं यार. विजय आया था क्या सेट पे? नहीं आए थे. नहीं बता दो. नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं आए नहीं. एक हैंडसम गाय आया होगा, तुमने बोला ये कौन है? वैसा नहीं. नहीं, वो तो मैं मिरर पे देख रहा था. So you know Vijay Devarkonda looks like? Yes, I do know what he looks like. He's a famous actor from the South, of course. Yeah. तो वो नहीं आए थे सेट वो पे? नहीं आए थे सेट पे. इतना तो मुझे पता है यार. मैं पता हूँ इतना स्मार्ट नहीं हूँ लेकिन. Okay, last segment सिड के का अंगार. But before that ध्यान से सुनिए I love जीजा जी. ये जो है I love जीजा जी सिड के टीम ने, सिड ने बनाया हुआ है. तो ये टी शर्ट जो है we are going to give it to you all. तो आपको क्या करना है? Why do you love to hate your जीजा जी? आपको वो क्या एक रीजन है जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है कि मैं नफरत करूं अपने जीजा जी के साथ? कमेंट्स डालिए यहां पर. और ये पर्सनलाइज टी शर्ट्स आई शपथ आपके घर तक पहुंचाएंगे इफ यू गिव अस गुड आंसर्स. राइट? आई लव जीजा जी. I love जीजा जी. आई लाइक दिस. बहुत अच्छा है ये. तो टी शर्ट्स अप फॉर ग्रैब्स. कमेंट्स में डालिए ये है सिड के का अंगार. ओके, we're doing a quick rapid, huh? What a great link. Wow, you're so superb, यार. Wow, man. One take, यार. मुझे 3 takes लगेंगे इतने एनर्जी के. अरे यार, I'll tell you what, I'm a very bad actor. I really am. That's why I never get into acting. But I'm great at being myself. But if you end up telling me do this, do that, I can't do it. I really mean it. That's why a lot of people ask me in life, yaar, why didn't you think of acting? You know, I've been around for so long. I could have got one character role. Absolutely. But never, because I'm not great at playing roles. I'm great at being myself, hopefully. But what you do, I can never do. You're being boisterous in one film and then fucking you do this. I can never do that, man. So it's always greener on the other side. I'm good, thanks. Otherwise, ये भी आप करते तो मुझे काम ही काम मिलता. जहाँ देखो सिट के. वाह यार. Favorite Kapoor? रणबीर या अनिल? रणबीर. Hmm? Yeah.
अनिल क्यों नहीं यार? अनिल भी तो, you met him or not? Of course, we had some great chats with him. Anil sir is more as a mentor. But वो favorite में एक comfort zone होती है ना. It's not to do with Anil Kapoor sir, it's to do with my relationship with Anil Kapoor. I have kept him only on such a high pedestal that I would look at him as a mentor, but I would be friends with Ranbir. You know, and Ranbir's number would be in my favorites if he ever replied to my message. देखो तेरा क्या प्रॉब्लम है? यू वर्क विद रणबीर यार, यू शुड मेक मैसेजेस. Yeah, but he's a busy guy. I think also we're all professionals. We came in as professionals. हम थोड़ी ना दोस्ती करने आए. हम एक कैंप नहीं था. एक पिक्चर बनाने आए थे. We all turned up as professionals. Sure, we exchanged number, but there is no expectation for us to become great friends after that. मेरे दोस्त भी आके बोलते अरे रणबीर दोस्ती होगी. I said हाँ दोस्ती हुई थी सेट पे. We were professionals. He was kind enough to give me his number. That's his magnanimity. But I will not abuse it. सेंसिबल बंदा है पर तृप्ति तो पक्का भाई. मैसेज कर DM तृप्ति हैशटैग होना चाहिए. और नेक्स्ट मिनट हाँ से DM तृप्ति हैशटैग. ओके, संदीप वांगा रेड्डी या ओम राउत? A very difficult question you're asking. I'd pick both, for sure. They both have such amazing styles. Unfortunately, Om sir's last film didn't do well, but that doesn't take away from the master storyteller that he is. And I will pick both without batting an eye. दृष्टि धामी या रश्मिका मंदना? Drashti Dhami. Always my favorite. That girl is just amazing. Yeah. Amazing means what? As in, काम में amazing, as a friend amazing. I think the greatest thing I find about Drashti is that in so much success also she is humble. And I'm not saying कि Rashmika वैसे नहीं है. I just know Drashti a lot better than I know Rashmika. And that is why I would pick any time Drashti Dhami. She's just a lovely person. अभी आखिरी सवाल. One character you could pick besides yours in Animal जो मैं ये करता तो फाड़ डालता. रणबीर के कैरेक्टर को छोड़ के ऑब्वियसली. Thank you. नहीं तो बोलता आई वांट रणबीर's कैरेक्टर. हाँ बोलो. Yeah, we all wanted Ranbir's character. Bobby Deol's character, yeah. By far. The way he was कुछ बोले नहीं हो, पर उनकी आंखों में और उनके फाइट सीक्वेंस में और जिस तरह से वो लेटते हैं रणबीर के ऊपर, सिगरेट मारते हैं. I mean every frame it's masterpiece. I don't think I'll be able to know. I don't know. Bobby Deol के कैरेक्टर मैं नहीं कर पाऊंगा Bobby से अच्छा. I'm very happy with Jija Ji's role. I would love to play Jija Ji again. बट कहा जाता है कि बॉबी और रणबीर के बीच में किस था, which has got deleted. That's what's doing the rounds. Oh really? I want to know whether it's a smooch or a kiss. I don't know. पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ. Really? Online they're saying कि इनफैक्ट बॉबी ने कहा है कि there's a kiss between me and रणबीर जो edited है, जो OTT में शायद आएगा. Wow. I'm curious to know whether a kiss. I think it might be a kiss because जो fight sequence उनका था बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया था कि दो भाई हैं, एक को सुनाई नहीं देता, दूसरा बोल नहीं सकता. In that kind of a resonated thing कि maybe in different times they would have been the best of brothers. You know, a brotherly kiss seems like a good choice to make, and Sandeep sir makes great choices, so I think it'll be a kiss. Smooch is like, come on, yeah, that's just twisted. Smooch तो नहीं हो सकता. Kiss होगा. Kiss होगा. It must be that brotherly. Yes. I love your take in it as well. Last scene में old रणबीर कपूर आते हैं. जी. Do you think that was the clone? Such a good question, no? No, I think that is the actual one क्योंकि I have a theory behind it. बोल ना, I want to know. वो जो बंदर के बारे में जो कहानी बताते हैं वो उन्होंने यंग में भी बोला था और वो जब बूढ़े होते हैं तो ओल्ड में भी बताते हैं और वो शायद एक बात है जो इम्पोस्टर इस्तांबुल रणबीर शायद ना जाने उसके बारे में. तो मुझे वो अच्छा क्लू लगा कि मे बी दिस इज द एक्चुअल वन. बट आई फील एनिमल पार्क में इफ इट वाज एक्चुअली द ओरिजिनल रणबीर कपूर जो ओल्ड हो जाते हैं जी, then we already know what's happening in Animal Park. Yeah. Because that means the original Ranbir Kapoor beats the clone Ranbir Kapoor. But that is what we knew from the beginning because even in Animal, the movie opens with an old animal, with an old Ranbir Kapoor. And then at some point you show him lying and blood flowing out over there and you think so many times he will die.
but he still doesn't. And that's the great thing about the storyteller that is Sandeep Reddy Vanga. He gives you the end. He doesn't keep you guessing. He gives you the end and then he shows you the way. Quentin Tarantino does that also. These are great filmmakers who are breaking the way of storytelling. And they're saying, I'm so confident about my content कि भाई एंड भी दिखा दूंगा तब भी तू बैठ के देखेगा. ये होती है ना बात. Thanks, Sid Karnick. जी हाँ, I love Jija Ji. Vote for Jija Ji. And vote for Sid with Tripti. And Sid with Sid. I think this has been a brilliant one, man. Thank you so much. So good. And I'm so happy. And I've really liked you as a person. बहुत कम मिले बीच में, but जब भी मिले बहुत अच्छा लगा है. And I think Sid, तुम्हारा जो self realization अपने बारे में, you know, your self realizations are fabulous. That's what makes a good actor. When they understand themselves. तुम्हारे पास life में इतने सारे experiences है, right? You've got so many experiences which will come in your characters and which will make you a better actor every film, every project. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Sid Karnick. Sid Kannan, अगर मैं दो मिनट के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि I've always looked up to this man in his perseverance, in his versatility, in his amount that he's worked. Today, we were talking, it's been 30 years, Sid K has been at it and ruling it. Today, he's created a channel. Earlier, and I can understand the projection of wanting to work for a channel. And now these big, I don't want to name them, but the biggest of publications are coming and wooing him, asking him to make this channel theirs. That is success to another level, brother. I am so proud of you. Well done, Sid K. I am a big fan and I'm truly honored to be here, to be present and to be talking to you. Thank you so much. And I know your dad, जो ऊपर से देख रहे हैं, he's blessing you, he's blessing me. I remember 2-3 मिनट मिले थे शायद, उसके बाद, you know, he left such a huge impact on me. And I think he's doing the magic, brother. With your mom as well. Thank you. Thank you. Bye.